Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So, Assalamu alaikum. This is Misbah Sajid, and I welcome you all to my channel, Talim for Everyone. Now, from onwards, we are going to see New Syllabus Mathematics Book 1 2 contents as well. New Syllabus Mathematics Book 1. I have covered almost a lot of things from that book, New Syllabus Mathematics Book 1. But now I'm going to start with Book 2 as well. Okay. So I hope so you will like my all lectures and videos. So from today's video, we are going to see chapter number 16, Statistical Diagrams from New Syllabus Mathematics Book 2. As you all know that chapter number 15 from book 1 are related to statistics. Okay. So I have covered that chapter in detail, every exercises and almost every questions. Okay. So for book 2, we are going to see this chapter number 16, statistical diagrams. Okay. So now be with me. So now I hope so this chapter is visible to you all. So this is chapter 16 and statistical diagrams. Okay. So this section 16.1 is just a basic that it is telling us that we have covered pictograms, bar graph, pie charts, and line graphs in book 1. Okay. Now, here in book 2, we are going to start with section 16.2. Okay, from chapter number 16, that is related to dot diagram. So now let's see what is basically dot diagram. Then we will do work example 1 in this video. Okay, so 16.2 dot diagrams. A dot diagram consists of a horizontal number line and dots placed above the number line. The dot represent the values in a set of data. बेसिकली डॉट डायग्राम एक ऐसा मतलब कि कैन से एक ऐसा ग्राफ या डायग्राम है हॉरिजेंटल जो लाइन होती है उसमें आप नंबर जो है मार्क करते हो और जो भी उनका जो डेटा होता है वो जो है वर्टिकली डॉट्स में जो है नंबर लाइन पे जो है प्लेस हो रहा होता है ओके सो फॉर एग्जांपल इफ यू सी this example over here, like this is a number line 18 till 30 और फिर जितनी फॉर एग्जांपल 18 जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा होगा 20 जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा होगा 21 like 22 23 and all the such things जितनी दफ़ा जो है डेटा रिपीट हो रहा होगा उतने ही जो है हम डॉट्स जो है मार्क कर देंगे उस नंबर पे ओके सही होप सो यहाँ तक तो इतना समझ में आया होगा second thing is that few examples, you not example exactly, but few terminologies are here that will be used in dot diagram. Okay, like range, clusters, extreme data, and symmetry. So if you see this diagram over here, range means that from lowest value till highest value आपका की range कितनी है. Like if you see here, the range of this data is 18 till 30. Okay, and cluster means data that is visually grouped about certain values. Cluster means कि कितनी टाइम कितना जो है वैल्यूज में जो है आपका ग्रुप है फॉर एग्जांपल अगर आप इधर देखो तो ऑलमोस्ट ये एक एक वैल्यू जो है कवर है बट नॉट एग्जैक्टली ऑल वैल्यूज आर कवर तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ सो इफ यू सी दिस इज 18 20 21 22 23 बिग गैप के साथ 30 है सो इट मींस दैट कि जो ग्रुप है वो 18 टिल 23 है ओके फिर उसके बाद 23 से 30 तक जो है गैप है फाइन सही होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा extreme data that deviates significantly from the other data. For example, if you see 18 till 23 तक तो ग्रुप है बट 23 से 30 तक जो है गैप है सो फिर 30 पे जाके जो है आपका डेटा है ठीक है सो दैट इज बेसिकली एक्सट्रीम डेटा सो 30 is the extreme data. Symmetry means equal number of data on each side of a value. For example, symmetry means if you see this 21 के दोनों साइड्स पे जो है 20 एंड 22 उस पे जो है सिमिलर डेटा है
ठीक है, या आप 20 लो तो 20 के सेम बोथ साइड पे 18 एंड 21 पे सेम डेटा है, फाइन. So this is you can say that it is symmetrical data. Fine. So this is all about dot diagram. Now we are going to see example one of this diagram. So here is worked example related to dot diagram. The table shows the time taken in minutes for 12 employees of a company to travel from their homes to office. For example, in this table, टाइम गिवन है मिनट्स में, ओके, एंड दिस इज रिकॉर्डेड फॉर 12 एम्प्लॉयज जिनको फ्रॉम होम टू ऑफिस कितना टाइम लगता है. सो यू हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ डॉट diagram. Means minutes given in like 20 minutes, 22, 21, 21, 18, 18, 30, 20, 22, 23, 22, 20. Fine. So step one is that identify the range of values, that is 18 minutes to 30. मीन्स के इफ़ यू सी लोएस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे 18 है एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 30. सो 18 टिल 30 आपने जो है अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है क्रिएट करनी. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. नाउ अब हमने देखना है 18 पे कितना रिकॉर्ड है. सो 18 देयर आर टू 18. सो इट मीन्स दैट 2 पर्सन ऐसे हैं जिनको फ्रॉम होम टू ऑफिस 18 मिनट्स लगते हैं. ओके, नाउ 19 देयर इज नो 19. 20 1 2, and here it's 3. 21 1 2, 22 1 2 and 3, 23 1, 24 no, 24 no, 25 26 27 28 29 nahi, 30 30 only one. So it means that okay, there are two peoples who takes almost 18 minutes from their home to the office, or there are three peoples who takes 20 minutes, two peoples who takes 21 minutes, three peoples who takes 22 minutes, one is a 23 and one is a 30. Okay, so it's all about this, how we represent the data on a dot diagram. Now they are saying that briefly describe the distribution of the data. Means कि how can we describe this data by using these terminologies. So the time taken for the 12 employees to travel from their homes to the office ranges from 18 minutes to 30 minutes. So this is the range. Okay, and the time taken is clustered around 20 to 23 minutes. If you see 20 minutes to 23 minutes, this is the group. So clustered data कहाँ पे है हमारा लाइक कर रहा है 20 to 23 minutes. Next is there is an extreme value of 30 minutes. 30 मिनट पे जो है you can say that हमारी extreme value है because 23 के बाद आपका 30 रिकॉर्ड में आया है. 24 till 29 no record. सेकेंड थिंग इज दैट सिमेट्री देखते हैं सिमेट्रिकल डेटा है या नहीं है. इफ़ यू सी मुझे दिख रहा है सिमेट्रिकल डेटा है बट यहाँ पे जो है नहीं लिखा हुआ. सिमेट्रिकल डेटा जो है 21 मिनट्स पे है बिकॉज इफ़ यू सी 20 and 22 मिनट्स so there is equal number of data recorded for 20 and 22. So it means that 21 जो है वो you can say that symmetrical data है. ठीक है for us. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को जो समझ में आया होगा. If you have any query, so you may comment your query anytime. I will try to respond them as soon as possible. So thank you for watching. If you like this video, so don't forget to subscribe my channel Talim for Everyone and press bell icon and hit like button so that you may get notified about my upcoming videos. So thank you once again. Allah Hafiz.